Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामाचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम सुषमा। थैंक यू सोनू एंड राजेश। और अब हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख। Domestic stocks logged marginal losses amid mixed global cues. Sensex closes below the 53,150 points. Nifty settles near 15,800 level. The rupee weakens to 79 rupees and 37 paise against the US dollar, and Brent crude prices hover around $111.70 per barrel. मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर सूचकांक मामूली गिरावट पर हुए बंद। सेंसेक्स 53,150 के स्तर से नीचे आ गया। निफ्टी 15,800 के स्तर के करीब हुआ बंद। रुपया डॉलर के मुकाबले गिरावट दर्ज करते हुए $79.37 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $111.70 प्रति बैरल के आसपास रही। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। वैश्विक शेयर बाजारों से संकेत मिले जुले रहने के बीच सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट पर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 53,150 के स्तर से नीचे बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 15,800 के स्तर के करीब रहा। सेंसेक्स कुल 100 अंकों की गिरावट से 53,134 पर दर्ज हुआ और निफ्टी 24 अंक कम होकर 15,811 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.35% की गिरावट में रहा। हालांकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.2% की बढ़त दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty logged marginal losses amid mixed global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange closed below 53,150 points, while the Nifty at the National Stock Exchange ended near 15,800 level. The Sensex lost 100 points to end at 53,134, while the Nifty slipped 24 points to settle at 15,811. In the broader market at the BSE, the mid-cap was down 0.35%, while the small-cap index ended 0.20%. In the Sensex pack, 12 companies posted gains, while 18 logged losses. Power Grid was the top gainer as it climbed 1.6%. Bajaj Finserv surged 1.2%. Hindustan Unilever rose 1.1% and Sun Pharma added 0.8%. On the other hand, ITC plunged 1.7%, Wipro tumbled 1.6%, Maruti and Larsen & Toubro both declined 1.1% each. IndusInd Bank fell 1%. In sectoral indices at the BSE, 7 sectors gained while 12 witnessed losses. Power and utilities gained the most as it added 0.6% each, whereas metal rose 0.5% and the healthcare sector ended 0.2% up. On the other hand, IT and tech sectors declined 0.6% each. Bankex lost 0.4%. Auto and telecom, both indices ended 0.3% down. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,664 companies gained, while 1,637 fell. Shares of 142 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 42 पैसे की गिरावट दर्ज करता हुआ $79.37 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 1.08% की तेजी से 106.28 पर था। सुषमा जी, आज शुरुआत बाजार की ओपनिंग स्ट्रांग हुई थी और एक टाइम पे 630 पॉइंट्स के करीब ऊपर था, लेकिन फिर हमने गिरावट आती हुई देखी। तो क्या लगता है आपको, अभी
क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं, पलड़ा किस तरफ है? देखिए, इस वक्त तो ज्यादातर नेगेटिव फैक्टर्स हैं, जो मतलब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक तो विश्व स्तर पर इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो बढ़े हुए हैं। हालांकि आज थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है ये भी $111 पर बैरल है। तो और इसमें ये अभी तक ये असेसमेंट नहीं किया ठीक से किया जा रहा है कि आगे की स्थिति क्या होगी, क्योंकि इसके ऊपर मतलब कई फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। एक तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का है कि ये कितनी देर चलेगा, और दूसरा ये है कि कोविड का भी असर है कि कई देशों में कोविड अब फिर से फैल रहा है, कहीं वो पीछे जा रहा है। तो हमारे देश में ही देख लीजिए कि अभी केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। तो एक तो क्रूड, ये तेल के दाम के जो इश्यू है, और दूसरा इन्फ्लेशनरी प्रेशर सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ये तो हमें मालूम है कि हमारे देश में आ गए हैं। रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने शुरू की है, लेकिन ये दुनिया भर में हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स की मतलब इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का असर आ रहा है, और सेंट्रल बैंक्स का रिएक्शन यही है कि वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। तो ये एक जो ये बहुत मोटे तौर पे जो इम्पैक्ट है मार्केट्स के ऊपर, और मार्केट्स के ऊपर और भी इस वक्त वजह हैं। जैसे आज जैसे आपने कहा कि पहले तो बढ़ रहा था निफ्टी और सेंसेक्स, उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स खुली थी और यूरोपियन मार्केट्स की डाउन स्विंग दिखाई दी, और उसका असर भी ग्लोबल क्यूज का भी असर होता है हमारी मार्केट में। और तीसरा शायद हमारी कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं। अगर आप देखिए तो ट्रेड डिफिसिट हमारा बहुत बढ़ गया है। हालांकि एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी तरह से बॉयंट हैं, बहुत रिकॉर्ड लेवल पे आ रहे हैं, लेकिन हमारी जो आयात की स्थिति है वो भी बहुत बढ़ी हुई है तेल की वजह से, और इसकी वजह से ट्रेड डिफिसिट बढ़ गया रिकॉर्ड लेवल पे, शायद मेरे ख्याल $25 बिलियन के करीब है रिकॉर्ड लेवल। तो ये भी सारे मिल मिला के काफी फैक्टर्स हैं, पर ज्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। So in all this, what about the valuations? They have gone much lower than what they were earlier. So do you think there's a scope for the market to correct fundamentally, and that scope is quite large? Yes, if you see, in some cases, of course, the market is, in cases of some companies, there's a feeling there's an overweight in some sectors. But of course, for instance, if you talk about the LIC IPO, then the LIC IPO opened at about, I think, 950 or something, is currently about trading at about 650. Now, these are the areas where investors can go in and make purchases because, I think most analysts are expecting that the valuation will go up over the next 6 to 8 months. So these are areas where definitely people can go in and make investments right now. But it is I think a good idea to be cautious at this stage, and perhaps just people who are in the market for the long run should really stick to their probably mutual funds. सो कॉशियस ऑप्टिमिज्म का जो है वो सीजन अभी कंटिन्यू कर रहा है। अभी मैक्रोस की, अगर हम डोमेस्टिक मैक्रोस की बात करें तो S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज PMI जो आया है जून के लिए 59.2 पे आया है, विच इज एन 11-year हाई। फिर अगर हम UPI ट्रांजैक्शंस देखें जून में तो 10 लाख करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई हैं फॉर द सेकेंड मंथ। GST कलेक्शंस ऑफ कोर्स, ऑल दिस इज इंडिकेटिंग कि जो इकोनॉमी है बेसिक हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी वो स्ट्रेंथ, उसमें स्ट्रेंथ है बिल्कुल। और इसलिए मैंने कहा कि जो ज्यादातर जो फैक्टर्स जो स्टॉक मार्केट के ऊपर हावी हैं इस वक्त वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। डोमेस्टिक फैक्टर्स अगर आप देखें, जैसे मैंने ट्रेड डिफिसिट की तो बात की, लेकिन आपने जो आंकड़े बताए हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं। वो PMI तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, 59 पे अगर आ गया है, और वो भी सर्विसेज का जो बहुत हेतु हुए थे। तो और GST कलेक्शंस तो हमें मालूम ही है कि बढ़ ही रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है, मतलब 1.44 लाख करोड़ मेरे ख्याल पहुंच गया है। तो ये जो सारे आंकड़े हैं ये कुछ मतलब पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ हैं, लेकिन इसका जो इन्फ्लेशन का जो असर है
ये एक dampener समझ लीजिए. This is a headwind which has to be faced by the economy. You mentioned inflation, you mentioned about the energy prices, and third we talked about the valuations also. What about the war? You know, the war is lately becoming a little bit inside pages instead of the front pages. Yes, correct. Going forward. So let's hope that even at that front we will hear less bad news. Do you think that the worst is behind us? And, it's very difficult to say. I think the good comparison or good way to look at it is we talked about crude prices earlier in the day, Rajesh, where we talked about these two financial institutions having made varying projections for the future. I mean, you have JP Morgan saying that, oil is going to be $190, over the next 6 months, and Citi Research is saying that it would 45. be 65, I think. Yeah. So, the fact is, that's why I mentioned this, because the Ukraine conflict really nobody knows what's going to happen. There is a hope that it will end quickly, but it could also drag on for quite some time now. And if it drags on, then you have a situation where you are going to have, for instance, sanctions against Russia will continue, which in fact have ripples all over the world in terms of natural gas supplies to Europe, in terms of, for instance, India and China buying crude oil from Russia, Russia's own output going down. That net availability of oil not being available in the market means that oil prices will go up. Leaving aside oil, you have the issue of other supply chain issues. There are a whole lot of other products that are coming from both Ukraine and from Russia. And one big issue, of course, is food grains, wheat. And, of course, the World Trade Organization has discussed that how do we deal with this issue of food grains availability, because Russia is finding it difficult to export. Ukraine is completely not able to do anything. And therefore, supplies to some of the developing countries are constrained. Then there are metals. But metals, and there are a lot of key metals which come both from Ukraine as well as from Russia. The market there apparently is, of course, the market here is going up, but the fact that metals prices, which had shot up immediately after the Ukraine conflict, have now kind of settled down. They're not that high as they were. But still, these are all areas that will be impacted by the Ukraine conflict. And as you rightly say, that people are not talking so much about the war, but the impact of the war is still affecting us. So, अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, इंटरनेशनल ब्रोकरेज नोम्यूरा ने कहा है कि कई मेजर इकोनॉमीज, नॉट ओनली यूएस, ईयू, यूके, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वो सिंक्रोनाइज्ड स्लोडाउन की उन्होंने बात की है कि सिंक्रोनाइज्ड रिसेशन अगले 12 महीने में आ सकता है. एंड नोटेबली इंडिया हैज नॉट बीन नेम्ड. तो आपको लगता है कि भारत पूरी तरह से बच पाएगा इस सिचुएशन से? भारत पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, भारत बच तो नहीं पाएगा अभी भी. पहले हमने सोचा था कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हमारे ऊपर इतने नहीं होंगे, लेकिन जो फ्यूल प्राइसेस का पास थ्रू इफेक्ट हुआ, जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का असर हुआ है, क्योंकि वो तो हमारी डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट्स की वजह से सर्टेन क्रॉप्स वर नॉट, प्रोडक्टिविटी वाज नॉट एज हाई एज एक्सपेक्टेड. तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं, हमने सोचा था कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हमारे ऊपर नहीं होंगी जितनी हुई हैं अभी, लेकिन हो गई हैं और 7% से ऊपर आ गई हैं और आरबीआई के टॉलरेंस बैंड के ऊपर चली गई हैं. तो ये तो हम बच नहीं सकते हैं. हाँ, इसमें ये है कि हमारी कुछ, जैसे आपने कहा, हमारी जो डोमेस्टिक फंडामेंटल्स की जो स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं. एक तो जैसे आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा एक्सपोर्ट्स हमारा इस वक्त बहुत अच्छे विकेट पे है, बॉयंट एक्सपोर्ट्स. और वो जिसने भी आपने सर्विसेज की बात की, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी तरह बढ़ रही हैं. और इसका फायदा ये है कि इस वक्त जो रूपी का जो डिप्रिसिएशन है, उसका फायदा सर्विस एक्सपोर्टर्स को हुआ और मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर्स को इस वक्त हो रहा है.
तो लेकिन दूसरी तरफ ऑफ कोर्स ये है कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके भी दाम बढ़ गए हैं। तो डेफिनेटली हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ है। अब एग्रीकल्चर भी हमारा स्ट्रेंथ है। कृषि क्षेत्र में हमारी अब लगता है कि मॉनसून नॉर्मल होगा। मॉनसून अगर नॉर्मल होगा तो इस बार वही बम्पर क्रॉप आने वाला है चावल का, और फिर आगे वाले दिनों में सर्दियों में गेहूं का भी आएगा। तो ये हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसके ऊपर डेफिनेटली वी कैन बैंक ऑन देम, पर वी कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. Sushma, a lot has changed in the market. In fact, the template of the market has changed quite a bit. Same time, last year, we were talking about buying commodity stocks, inflationary assets, staying with IT and digital. It has changed quite a bit. What would your advice be in the current scenario to the investors? What approach should they take? Well, as I said, I think you must take right now a very cautious approach, because the market is very volatile, and you can have a sharp. Right now, you have a sharp downswing, but you could have a sharp upswing also. So you have to be very careful and not. I think also not get nervous. Then when your stock prices go down suddenly, don't suddenly let go of them at one go, because one does anticipate that the situation will improve over the next 6 to 8 months. Like we were talking, as Sonu says, the domestic fundamentals of the Indian economy. We are expected to be the fastest growing economy in the world this year. So the fact is, though FIIs are currently exiting the market, you will have investors coming back over the next 6-8 months, maybe 8, 9, 10 months. You will have a revival in the market. And not to forget, the domestic retail investors have stuck in the market. They are in the market and they are here to stay. And we have a huge new segment of retail investors, young retail investors, ever since COVID pandemic began. और अब एक महत्वपूर्ण संदेश के लिए लेंगे एक छोटा सा विराम, और फिर वापस लेके आएंगे मार्केट मंत्र. अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख. आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प. और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग. आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता. बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर. 8700014242. मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है. जून क्वार्टर समाप्त हो गया है और अब रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है. सुषमा जी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कॉर्पोरेट अर्निंग से? क्या लगता है आपको, कौन से सेक्टर्स आपको लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे और कहाँ हम कुछ स्ट्रेस देख सकते हैं? देखिए, एक तो बैंकिंग सेक्टर आपका बहुत अच्छे तरीके से रिवाइवल वहां हो रहा है, और दूसरा आईटी सेक्टर. ये दो बहुत, अगर आप मोटे मोटे पूछें, आईटी एंड टेलीकॉम, वो डिजिटल अरीना जो है इस वक्त बहुत ही अपस्विंग है वहां पर, और बाकी फार्मा का भी, फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर. तो ये मोटे मोटे तौर पे ये 3 सेक्टर्स मेरे ख्याल में ये दे आर वेरी पर्सपेक्टिव. Quickly, I would like to draw your attention to the rupee, which weakened to 79 rupees and 37 paisa today. Factors behind it, and going forward, how is it going to fare? See, the rupee has been depreciating fairly, I won't say rapidly, but it has been steadily depreciating, and but it is also other currencies are also depreciating against the dollar. So if you see, as compared to other currencies, in fact, some experts are saying that it is overvalued currently. It needs to depreciate further, and of course, rupee, yes, that it needs to depreciate further. And perhaps the level that people are looking at is 81 or 82 rupees. And of course, as I said, the positives in depreciating rupee or depreciating currency, any national currency, is that you get many benefits in terms of especially exports. And as you well know, that China has utilized this tactic, rather, currency manipulation
to ensure that they get more value out of their exports. So in this country, unfortunately, there seems to be always a hue and cry whenever there is the rupee is depreciating, but it is not necessarily a bad thing. As I said, of course, on the import side, we do have to pay more, no doubt, but at the same time, you get a lot of benefits. If you are looking to increase your exports, if you're looking to become an export-oriented nation, then you should not really be worried too much about the depreciating. But the common man suffers, he can't travel much. Well, the common man is not traveling internationally. Common man is not traveling internationally. With the turbine fuel and everything going up, But जैसा आप कह रही थी कि ये जो है सारी emerging market currencies में गिरावट है, and उनकी तुलना में अब एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि अभी तक ये जो डिप्रिसिएशन है वो उतना नहीं है. अभी भी रूपी इस वक्त ओवर वैल्यूड है in comparison to other currencies. So that should be like acceptable to both. Yes, both but as I said, this is in the public perception जैसे है कि अब 79 आ गया है डिप्रिसिएशन, तो इसमें थोड़ी सी घबराहट आ जाती है. आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं. डॉलर के मुकाबले आज यूरो 2 दशकों के न्यूनतम स्तर तक गिर गया. प्राकृतिक गैस की कीमतों में भारी उछाल ने यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए फिर चिंताएं पैदा कर दी. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ये स्पष्ट है कि यूरो क्षेत्र में व्यापार में वृद्धि पिछले माह धीमी पड़ गई. हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.1% की बढ़त में रहा और जापान का निक्केई 1% के उछाल पर बंद हुआ. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.8% की वृद्धि दर्ज हुई. हालांकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.5% की मंदी में रहा और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.4% की मामूली गिरावट दर्ज हुई. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां मंदी का रुख था. ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी और जर्मनी का डैक्स दोनों 1.1% की गिरावट पर थे और फ्रांस के कैक में 1.2% की मंदी थी. सुषमा जी, अब क्या कहेंगी, जो सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया पर, वो क्या बैकफायर भी कर रहे हैं टू सम एक्सटेंट? कैसे देखती हैं आप यूरोप की स्थिति को? हाँ, इस पूरा बैकफायर तो नहीं है, बट डेफिनेटली ये नहीं है कि सिर्फ रशिया के ऊपर असर पड़ा है. अगर आप देखें कुछ फॉर इंस्टेंस ये जो गैस की तरफ, गैस और तेल की तरफ, अब रशिया जो सप्लाई कर रहा है यूरोप को, और हालांकि जो देश हैं जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, और भी देश है, वहां से ज्यादातर जर्मनी के ऊपर बहुत ज्यादा असर है कि 40% उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट रशिया से आती है. तो अब रशिया कह रहा है, अब रशिया वो उन्होंने अभी नहीं बंद किया. रशिया कह रहा है कि हम तो ये जो पाइपलाइन है उसको थोड़ा बंद कर देंगे आप, क्योंकि ना अब रशिया उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप सैंक्शंस डाल रहे हैं तो हम आपको ये सप्लाई क्यों करें. तो वहां पर अच्छा वो कह रहे हैं कि अच्छा हम ऑल्टरनेट सप्लाईज की कोशिश करेंगे, हम शायद अमेरिका से ले लेंगे, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पे आप अपनी एनर्जी सप्लाईज, नेचुरल गैस या तेल कहीं और से खरीदना आसान काम नहीं है. ये जो शिफ्ट सोच रहे हैं ये आसान नहीं है. तो ये सैंक्शंस जैसे कहते हैं ना, डबल एज स्वॉर्ड है. तो रशिया भी उनके ऊपर दबाव डाल रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक करने की, जो फाइनेंशियल जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस उनको आप बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम दूसरी तरफ ये आपके ऊपर ये प्रेशर डालेंगे. So the euro today is slipping to a 2-decade low compared to a dollar. Does it surprise you? No, that is again, yes, it is one of the, not at all, because Europe is suffering the most as far as the conflict is concerned. Of course, developing countries, I will say, are the most, but these are the countries which are right next to the Ukraine and Russia, and therefore, they are getting the brunt of it. The refugees are all going to countries like Poland and everywhere. Right. So they have to use their own, of course, resources to take care of them. And then, of course, there are the energy issues. Plus, there is food issues. So many supplies, exports and imports, trade between Ukraine and Russia and Europe is, has been very robust. So therefore, the greatest impact is there. So you will have this kind of a situation with the euro depreciation against the dollar.
Okay, may we inform you that the U.S. markets were closed yesterday for the public holiday. Sushma, is there likelihood, and I'm just asking your opinion on it, on the Fed going forward, increasing the rate hikes, going in for more rate hikes? And if that be the case, then is there a debate for inflation versus growth, or is there a clear-cut decision we want to go in for inflation to some extent, and we can take care of the growth later? Yes. I think that argument has kind of been decided as far as the Fed is concerned. They are going to try and control inflation. I think this has obviously alarmed the policymakers in that country when you have inflation at a 40-year high. And it has never been, I think maybe in my lifetime I have never known that the U.S. has a higher inflation rate than India. Obviously, because developed economies have, they have already passed their high growth rates in the past, and it is countries like India and China who need to increase the pace of development. And these are countries which have been growing at 1 or 2%, Japan sometimes at -%. So developed economies have been, the inflation has been always at a very low level. Suddenly this impact, and once again we come back to the war. This is again a fallout of the conflict in Ukraine, and definitely I think the decision has been taken in favor of tackling inflation first. सुषमा जी, briefly, आपको लगता है कि maybe inflation has peaked, जैसा कि कुछ analysts कह रहे हैं? कहाँ पर? इंडिया में कि ग्लोबली? US में हाँ हो सकता है. US में हो सकता है कि it has peaked, क्योंकि अब aggressive rate hike है तो मेरे ख्याल में काबू में आ जाएगा. Moving on, the Brent crude prices slipped today after earlier gains caused by concerns of a possible global recession. Curtailing fuel demand outweighed supply disruption fears, highlighted by an expected production cut in Norway. In intraday trade, oil prices dropped more than 1.5%. Brent crude was trading at $111.70 per barrel, while WTI crude prices were at $107.95 per barrel. Sushma, the world oil demand is projected to be around 100.3 million barrels per day in the coming days. And in the current scenario, the crude oil markets have been gripped by many factors, which we have discussed. It is also recession, demand destruction, supply disruptions, and rock bottom spare capacity, to name a few. In such a scenario, volatility in the oil markets is here to stay for a long period of time? I would say that volatility in oil markets is here to stay as long as the Ukraine war continues, because it's directly linked to that. And if you have Russian oil coming back into the market, and if you have an agreement reached on Iran oil, then I think we may have some stability as far as availability is concerned, and then prices will stabilize. चलते चलते सोने पे एक नजर. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार वाला सोना 20 रुपए की मामूली गिरावट से 52,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. जुलाई अनुबंध वाली चांदी 200 रुपए की गिरावट से 58,300 रुपए प्रति किलो पर थी. उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर दिवसीय कारोबार में सोना $1,799.50 प्रति आउंस पर था. चांदी मामूली बढ़त के साथ $19.67 प्रति आउंस पर थी. समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुषमा जी, आप आई और हमारे श्रोताओं को आपने विभिन्न विषयों पर बहुमूल्य जानकारी दी. Thank you for being with us, Sushma. And before we close the headlines once again, domestic stocks logged marginal losses amid mixed global cues. Sensex closes below the 53,150 points, and the rupee weakens to 79 rupees and 37 paise against the US dollar. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.